Good evening students, good evening everyone, good evening Subhajyoti, good evening. Audible ache, is it audible? Right, so we will be discussing about the question paper. Basically we'll have an analysis of this, of the questions, right, of the paper 1. So start kariba, but before starting I would request everyone to share the link, right. This is mostly purata hi paper 1 ra analysis ta rahibo. So make sure you are sharing the link so that maximum people can join this, right. Yes, so this is the first question. This is the first question that we will be starting with, right. So the enclosure movement associated with the development of agriculture was in which country? England, Germany, France or Belgium, right. So this was the question. How many of you know the answer to this question? We will be like, this is a discussion, this is an analysis. Obviously I will be requiring your opinions. Tome kon jancha answer bisare mate kahutha, and then we will be discussing. Sonali, good evening, good evening. Please link ta ko share kar do tha, hela. The enclosure movement associated with the development of agriculture was in which country? Mostly England, Germany, France and Belgium. Quote enclosure movement ta kaha se associated thila? The correct answer is obviously it is England, right. England se associated achi. Mostly movement ta 14 and 15th century re mostly like placed achi, right. In this time period this happened, right. The enclosure movement. Good evening Neetu. तो या आगु तमे जानी थिबो that this 14 to 15th century तो माने feudalism बिसरे पढ़ी थिबो. Obviously you must be knowing about feudalism. Feudalism was something that existed from 9th to 14th century, and after that there was something which is known as commercial revolution, right. Commercial revolution, and then we'll move on towards the establishment of the industrial revolution. So this enclosure movement happened somewhere from 14th to 15th century, industrial revolution, and this happened somewhere between 14th to 15th century. And where did it happen? It happened in England, right. England is exactly the place where industrial revolution happened. This is the way the enclosure movement happened in that country, not in Germany, France or Belgium. Next is when slavery was legally abolished in British Empire. Slavery obviously तुम पढ़ी थी वो after slave trade होथला जहाँ भी होथला, but एटी question पचाची when was slavery abolished by the British Empire? Was it in 1824, 1834, 1836, 1835? What will be the answer? नीतू, सोनाली, शुभज्योति, बाकी समस्त जो मैंने भी अच्छा, प्लीज बी वेरी एक्टिव. भल लगुच क्लास थम्स अप करो. वी विल बी डिस्कसिंग मोर एंड मोर इफ यू आर मोर एक्टिव, right. So what will be the correct answer? B hobo correct answer. Sagarika has given the answer that it is the correct answer is option B, 1834. It is absolutely correct. Slavery Act गोटे पास हेतला. Slavery Abolition Act और Slavery Prohibition Act हमारा पास हेतला हमारा 1833 रे. The 1833 रे Slavery Act पास हेतला. But when did it come into effect? Effect रे आसिला केबे? Now it came into effect on probably 1st August 1st 1834. So the correct answer is option B. Correct? Next question ko jaba. Next question is, which of the following writers wrote their book entitled Nation and Nationalism, right? Ernest Gellner, Benedict Anderson or Stephen Berger, John Anthony Smith, Eric Hobsbawm, Ernest Gellner or Catherine Stewart or Partha Chatterjee. How many of these following writers wrote a book entitled Nation and Nationalism? Try to answer this particular question. This is an easy question. एटार कौन आंसर होबो तमने कौन भावुच यार आंसर होबो? शुभज्योति, सोनाली, नीतू, सागरिका and everybody else. If you are active, if you are listening, try to give an answer. Ki what will be the correct answer that wrote, who were the writers who wrote the book on entitled Nation and Nationalism? Eta answer hobo kono? Time neloni to mo answer ta kahi douchi. Yes, answer is A. Hela answer is Ernest Gellner and Benedict Anderson is the correct answer. Out of all these people, this person has also written something about nationalism, right? Partha Chatterjee bhi nationalism bisare lekhichante. Kon lekhichante se bahi ko bahira na kono na derivative discourse, right? Derivative discourse.
right? This is an important book which was written by Partha Chatterjee, and derivative discourse रे कौन कहिया को चाहउछंती से apparently कहउछंती that हमर east रे और हमर India रे जो nationalism आसीची, right? India रे जहां nationalism आसीची, it is kind of not that mane, obviously there are other historians who are saying that the kind of nationalism that we have in India, it is a product of the Western imperialism or the Western colonialism, right? The nationalism in India is a product of the Western imperialism. This is of the like opinion of people like Ashish Nandi, or let's say even Gandhi and Rabindranath Tagore for that matter. But Partha Chatterjee कहउछंती that it is derived from the West. माने कहउछंती it is not a direct implication of the Western imperialism or the Western colonialism. It is what we have incorporated from the West. माने we have understood the idea and we have formed our own ways of nationalism, right? This is the idea. You should understand, you should know about this. Hela. Next is Westphalia Treaty associated with which war? 30 years war, 100 years war, Spanish Armada, 7 years war. Hela, eta bisar answer karo. The Westphalia Treaty was associated with which war? Westphalia Treaty ko barsha sehito associated अछि. Sagarika, only Sagarika answer douछि, au ke answer dou na. Sonali, Nitu, Subhajyoti, baki samaste jette ki acha, please share a thumbs up or like anything that you want to say, but try to give the answers. But correct answer hoछि 30 years war, right? Westphalia Treaty ro correct answer hoछि 30 years war. 1648 pakapakhi hela belku the Westphalia Treaty was signed, right? Clear? Understood? Subhajyoti, yes, no, the answer will not be B. 100 years war answer habani, answer haba amara A. 30 years war amara answer haba. Next is this question: which one of the following African countries got independence from its colonial rule at the earliest? Hela, eta ote tricky question पचाची at the earliest. एटा तुमको ए चारटा country भितरु ही कहिवार अछि कि आंक भितरु earliest independence के पाइचंती. देखिबा के कहूचे एटा. Eta kiye kohuchi independence African countries got independence from its colonial rule at the earliest pachachi. Pila mane there was a organization which was dedicated to give independence to the colonial nations, right, to the colonial areas, to the colonized countries, right. तो सेटा तमे आंसर करियो पई कि आंसर हम सागरिका देछि 5 रो बी. ओके, we'll go through that entirely. 5 रो बी. okay. Benin, if I remember, it happened in 1960. Hela, Benin, if I remember, happened in 1960. Rwanda, I guess 1962, if I'm not wrong. And Zimbabwe happened in 1980s, right? So Zimbabwe to hobbani, that is wrong, right? तुमको exact dates मन रखिवार दरकार नहीं, year मन रखिवा दरकार नहीं, but अंक भितरु सबुठु आगे independence, it's Benin, right? It is Benin. Hela. And the first African country which got its independence, right? The first African country जोटा independence पाइथिला सेटा होची Ghana. पिला माने मन रखिबा, first African country to get its independence is Ghana. And which organization is associated with giving independence? एटा मन रखो, it is the Trusteeship Council. हला, एटा हमर UN अछि. UN has 5 or like majorly तार माने major organs कोन अछि. We have the Secretary General, obviously the Secretariat. Then we have the International Court of Justice. Then we have UNGA, General Assembly, UNSC, and fifth is the Trusteeship Council. Trusteeship Council. Trusteeship Council has now ceased to exist. Trusteeship Council has now ceased to exist. The last country which got independence was Palau, and I think it got like the last country which got its independence was Palau. I think it was in 1994, and Trusteeship Council now has ceased to exist. Right, so we had the Secretariat or the Secretary General, then we have the International Court of Justice, United Nations General Assembly, United Nations Security Council, आउ गोटे भी अच्छी ECOSOC, हैला, ECOSOC, Economic and Social Council, हैला.
नेक्स्ट इज नेम द रिवर अंडरस्टूड एटा बुझिलो इंडिपेंडेंस पाइबा पई कि ट्रस्टीशिप काउंसिल सब कॉलोनीज मानको हेल्प करूथला एंड वन ऑफ द कॉलोनीज दैट गॉट इंडिपेंडेंस फर्स्ट वाज बेनाइन एंड द फर्स्ट अफ्रीकन कॉलोनी यस 6 ऑर्गन्स अछि 6टा अछि एठी हला एंड एठी देखो दैट द फर्स्ट कंट्री व्हिच गॉट इट्स इंडिपेंडेंस वाज घाना एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हला 6 ऑर्गन्स लिखिलो we have the secretariat, we have the ICJ International Court of Justice, United Nations Security Council, United Nations General Assembly and the ECOSOC, right? Next, name the river that found the borderland between Russia and China. Correct answer? Yes, correct. Sagarika, that is correct. It is Amur, right? The correct answer is Amur. This is like a border related question achi, easy achi. Direct answer here abo. When the first Sino-Japanese war was fought, what is the correct answer? First Sino-Japanese war kebe hithila? It happened from 1994 to 1995, 1933 to 1935, 1333 to 1335, 1665 to 1666 or 1558 to 1559. The correct answer is obviously Tanmay answer dala and Sagarika again. Good job both of you. The correct answer is 1894 to 1895. That is the correct answer. The first Sino-Japanese war was indeed fought in 1894 to 1895. Right? Constantly there has been a war between China and Japan. What you can see is Japan constantly wanted the areas of Chinese provinces. Like for example in 1919 जेतेबेले हमरो 1919 रे हमरो जेतेबेले Paris Peace Conference आसीथिला, Paris Peace Conference हला, one of the reasons why obviously Second World War happened is because the Paris Peace Conference failed to prove, like, give peace to all the nations, right? So what happened is ethare Japan was also a delegate, right? Japan was also a delegate, and what we have understood is Paris Peace Conference re kon 5 jana thile, 4 jana thile, big 4 thile, right? Big 4 we had USA, UK, France and Italy. एमान को हमें जानी छु एमाने माने foremost players गोड़ा थिले. Who was the other country जदि सेला big 4 न ही कि big 5 ही थांदा, तो other country which would have joined them was Japan हला. कारण जापान को दरकार थिला चाइना रो गोटे जगह जोटा के थिला हमर शांतंग प्रोविंस. मने अच्छी पिला माने शांतंग प्रोविंस. I have taught all these in the class. माने अटेंड करथिबो द शांतंग प्रोविंस हला. But it did not go, like, get the area, and that is why Japan participated in the Second World War, we can see, against the Allied powers, right? Next is, who among the following was successful admiral in Russo-Japanese War of 1904 to 1905? Tago Heihachiro, Akimoto Takashi, Hideki Tojo, Togo Nimitz. Eta answer karo. Russo-Japanese War was one of the turning point, because we could see in that particular war one of the eastern countries defeated the western countries. This was a very significant battle. भाभी की हुआ correct answer होगा. What will be the correct answer? No, it is Togo Hachiro. Hela, Togo Hachiro. That is the correct answer. Hela, if first war ta kahinki significant is because the Japanese had defeated the Russian Empire, and Russia painki bhi significant. See, history re everything is connected, as we say. तो ये जो रूसो जापानीज वॉर रो बहुत गुडे सिग्निफिकेंस अछि. रूसो जापानीज वॉर हला तार कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गुडे अछि पिला माने. फर्स्ट तो होची ऑब्वियसली द ईस्टर्न पीपल, ईस्टर्न डोमिनेंस टा में देखिलु प्रथम थर ईस्टर्न डोमिनेंस केमती ना जापान हैड डिफीटेड रशिया. दैट इज वन पॉइंट दैट वी सॉ. सेकंड रीजन इज रशिया रे ता पे स्टार्ट होची बोल्शेविक रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन जोटा स्टार्ट हला रशियन
रेवोल्यूशन बहुत गुडे रीजन कि कारण ना आर्मी जो जिनसा थिला तुम एठी गोटे जिनस देखिथिबो रशिया रे जतले एब्सोल्यूटिज्म आसीथिला रशिया रे मैम पेपर 2 रे 40 रु 60 पर्यंत सर करि नांती सेटा हब्बो स्मृति रंजन सेटा हब्बो सेटा कि असुविधा नै माने जिनस होची गोटे क्लास रे कम्प्लीट करि परिबोनी जदि मैं एक्सप्लेनेशन दबा गोटे गोटे जिनस तारे टिके टाइम लागिवो बट से क्लास टा हब्बो सिमिलरली आज रो क्लास रे भी पाखा पाखी 100 खंडे क्वेश्चंस अच्छी तो विच इज लाइक आमे प्रोबेबली कंप्लीट न कर पारले आमे नेक्स्ट क्लास रे पुनी कंटिन्यू करबा हला स्मृति किछ असुविधा नै तो ये जो रशियन रेवोल्यूशन रे गोटे जिंस होची तबले एब्सोल्यूटिज्म स्टार्ट होची पिला माने एब्सोल्यूटिज्म स्टार्ट होची आमे देखुचू तार गोटे कॉन्सिक्वेंस थिला सेलिंग ऑफ ऑफिसेस हैला ए सबु जिंस बहुत इंटरकनेक्टेड तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो तुम एमती मन रखिबो कहा पर कोटा हे थिला पिला माने तो मु डिफिकल्ट आकेबनी एब्सोल्यूटिज्म गोटे कांसेप्ट मन रखो जो थरे कि स्टार्ट हेथिला ए जो सेलिंग ऑफ ऑफिसेस ता रशिया रे बहुत अधिक मात्रा रे बढ़ी जायथिला तो सेठी आसिला कोन करप्शन आसिला नेपोटिज्म आसिला फेवरेटिज्म आसिला तो जो माने ऑफिस रे रहउथिले दे वर मोर रेस्पोंसिव टुवर्ड्स द रूलर कि रूलर खुशी तो आमे माने जो नोबल्स माने से माने बेसी रूलर्स माने को पई कि रेस्पोंसिव थिले तो ये सिचुएशन रे जहाँ भी रिसोर्सेस कलेक्ट होउथला जहाँ भी रेवेन्यू कलेक्ट होउथला सेते बेले से जो रेवेन्यू टा नोबल्स माने निज पाखरे रखी कि जोटा आर्मी पाएंगे दबा कथा आर्मी रे जोटा लगेबा कथा सेटा से माने करू नथिले बुझी पारछ तो कोन होची आर्मी को जतल रिसोर्सेस दरकार होची आर्मी को जतले हेल्प दरकार होची एक्सटर्नल माने रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्मी दरकार होची कि कौन सी प्रकार रिसोर्सेस दरकार होची सेटा तको ठीक टाइम रे मिली पारनी एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच वॉर रे माने कांस्टेंटली हमें देखिबा कॉन्सिक्वेंटली हमें देखिबा कि सेवरल वॉर्स रे रशिया हारी जाउची सो वन ऑफ द माने रीजंस इज रशियन रेवोल्यूशन रशिया को से माने बहुत बड़ कंट्री हिसाब रे देखुतले रशिया इज लाइक is viewed as one of the largest countries which is why in the first world war also तमे देखिबो सेतरे गोटे जिंसटा अछि स्काईफिलिन प्लान मने थिबो स्काईफिलिन प्लान जर्मनी रो थिला हला जर्मनी रे स्टार्ट हेथिला किए स्टार्ट करथिले जनरल स्काईफिलिन जे कि जर्मनी रो थिले सी कोन प्लान करथिले एंटायर प्लान टा थिला कि जर्मनी शुड अटैक एंड conquer France before Russia joins the war एटा सिंपल लेमैन टर्म्स रे हम जदी स्काईफिलिन प्लान को बुझिबा पिला माने ए सिंपल जिंसडा थिला दैट जर्मनीज जनरल स्काईफिलिन वांटेड दैट जर्मनी शुड conquer France before Russia joins the war समान समस्त डरी की थिले फ्रांस रशिया ठू बट एज अ रिजल्ट यू कैन सी इवन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बैटल ऑफ टैननबर्ग होची रशिया इज गेटिंग डिफीटेड बाय कंट्रीज लाइक जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगेरी तो यही सिचुएशन में देखु 1917 रे सेतबेला ऑब्वियसली रशियन रेवोल्यूशन हितला 1905 रे भी ब्लडी संडे होची तो ए रीजंस पाई कि व्हाई द रशियंस आर माने काहे कि से माने रेवोल्यूशन स्टार्ट करछन इज बिकॉज़ दे वांट द गवर्नमेंट टू बी मोर रिस्पांसिबल जो थी पाई कि ता परे आसुचंती किए ना लेनिन तो सेटा it is all of this is connected right तो absolutism पर्यंत नहीं कि तमे देखिलो जो केमिति because of the selling of offices धीरे धीरे गोटे ब्लॉक बाय ब्लॉक जिनसरा खराब ही रूसो जापानीज वॉर रे रशिया हारी जाउची जापान ठू एंड हाउ दैट इज कंट्रीब्यूटिंग और तार गोटे कॉन्सिक्वेंस होची रशियन रेवोल्यूशन हैला सेटा तो थिला डायरेक्टली अफेक्ट जहा कला ईस्टर्न कंट्री रो गोटे डोमिनेंस हैला सेकंड होची रशियन रेवोल्यूशन टा हैला थर्ड इम्पोर्टेंट होची इंडिया रो लोक मानक ऊपर भी सेटा बहुत माने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट रे भी तार बहुत इंपैक्ट थिला पिला माने से मान जतले इंडिया रे जतले किए थिले राजा राममोहन रॉय ईश्वर चंद्र विद्यासागर एमान समस्त जतले ए टाइम पीरियड रे रहउछ 1905 व्हिच मींस लाइक जस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल हेई सारची और जस्ट हबा को माने जस्ट माने इफेक्ट हबा को जाउची ए टाइम रे सेमान जतल देखुछंती ईस्टर्न कंट्री हैड डिफीटेड अ वेस्टर्न नेशन तो तांकर से जो रेशियल सुपीरियरिटी जोटा आइडियाटा जोटा सब बडे इंडियंस मानक मुंडरे थोपा जायतिला सेडा बे से माने कोन भूलुथिले धीरे धीरे भूली जाउथिले एंड दे कुड रिकंसीडर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स व्हिच हैपेंड सो इन 1905 when they went or like protested against the partition of Bengal तो 1911 रे लॉर्ड हार्डिंज को टाइम रे annulment of partition of Bengal हैला बुझी होची ना कंफ्यूजिंग लागुची मु कोटा कोआडे वाणी की मिसई दोची तुमको लागुथबो कि मैम कौन रशियन रेवोल्यूशन कहउचंती तापरे इंडिया को पळे आसले तापरे ब्रिटेन रो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पढउचंती बट दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी हिस्ट्री टू नॉट फॉरगेट इट हैला
हिस्ट्री टा डिफिकल्ट नुहे सब जिनस सेम टाइम रे होची तो कोटा सेम टाइम रे होची से जिनसटा तो मन रख देबो जदी क्रोनोलॉजी भी मन रहबो इंसिडेंट्स भी मन रहि जबो तमरो तो भल लागिबो पढ़िबा पई अंडरस्टूड क्लियरली ग्रेट सो नेक्स्ट को जिबा दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन हु वाज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना ए करेक्ट सुन यात सेन हला सुन यात सेन करेक्ट हला Mao Zedong also played an important role, but founder of modern China is Sun Yat-sen. Next is, in which province did the well-known Chinese Long March of 1934 to 1935 had come to an end? Long March जोड़ा हेइथिला सेटा Mao Zedong जोड़ा अपने जोड़ा ये हेइथिला सेटा कोठी सरुची D correct शांसी एटा बहुत इजी तो ऑब्वियसली आमे देखिबा एठी चाइना रे भी कॉलोनियलिज्म रो इफेक्ट्स आमे देखिबा को पाइबा जतबे कि गोटे पार्क रे पिला माने गोटे साइन बोर्ड मरा हिथला नो डॉग्स और नो चाइनीज हला तांकर गोटे इंपोर्टेंट पार्क रे ए जिंसटा लगा हिथला तो सेथि पई कि सेठी चाइना रो इंडिपेंडेंस मूवमेंट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट राइट एटा कोठी लगा हिथला को पार्क रे लगा हिथला ए पार्क टा कोठी where is the park or province कोटा भी कहिले you will get brownie points हला एटा को पा ए जो साइन बोर्ड टा कोठी मरा हिथला ओटा इंपोर्टेंट जगह रे मरा हिथला who was the founder of the Ottoman Empire Osman Ghazi Osman Khasi Osman al-Raza Osman al-Rashid एटा आंसर को exploring heritage art architecture hela what will the answer of this who was the founder of the Ottoman Empire Ottoman Empire plays a very significant role in the history right and तारा founder किए थिले plus हमें जदि world war time रे देखिबा Ottoman Empire Turkey had played a very important role yes सुष्मिता answer दला first time नहीं नहीं आगटा भी देथिला बट यस फर्स्ट आंसर सुष्मिता दोची सो करेक्ट इज ओस्मान गाजी Ottoman Empire as I was saying also played a very yes Huangpu Park yes correct class रे कहितली एटा तमर मन अछि सागरिका तो दैट इज करेक्ट हैला इन Shanghai province रे Huangpu Park right तो से जिनसटा यस तो ए जिनसटा थिला ओस्मान यस as I was talking about Turkey also had a very important role in the first world war what you can see कि one of the reasons why it started basically Rome Berlin Baghdad से जो एक्सिस टोक्यो से जो एक्सिस टा रही थिला तो माने मोस्टली तमे देखिबो कि टर्की प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेटा थिला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रे कोन हिथिला ना ता आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड a treaty was signed with it what was the name of the treaty of Severus that was signed with Turkey and Turkey was a part of Bulgaria part of the central powers रे आउ के थिले बुल्गारिया जर्मनी एमन्स हला Next is, yes, this is an important question. What were true about sinking of the Lusitania? It was a passenger liner of Britain, ran between USA and Europe on Atlantic Sea. A ship was attacked by Germany by U-boat, claiming that it was carrying ammunition. It became the pretext for America to enter into the First World War indirectly. Lusitania. Koda correct? It was a passenger liner of Britain, then ran between USA and Europe and Atlantic Sea. Okay. A ship was attacked by Germany. It was a ship which was attacked by Germany by a U-boat claiming it was carrying ammunition, and it became the pretext for America to join the First World War indirectly. That is correct. एटा अवश्य एटा इनडायरेक्टली जिनसटा टिके
खटकुची इनडायरेक्टली कौन माने डायरेक्टली तो अमेरिका एंटर कला इनडायरेक्टली कौन बट मे बी द रीजन सेटा तो डी हम करेक्ट आंसर है 1 2 3 4 चार्टा जाक ही करेक्ट आंसर हम यूएसए वाज एक्चुअली द लास्ट टू एंटर द वॉर है तो हाउ डिड द वॉर स्टार्ट इट स्टार्टेड विथ व्हेन सर्बिया है सर्बिया ऊपर वॉर डिक्लेयर कला ऑस्ट्रिया हंगेरी ऊपर वॉर डिक्लेयर कला फ्रांस ऊपर वॉर डिक्लेयर कला जर्मनी है जर्मनी ऊपर वॉर डिक्लेयर कला रशिया है सो द लास्ट पीपल टू जॉइन द वॉर वेर यूके है आपको पुणी जॉइन कला यूके एंड यूएसए वाज द लास्ट टू जॉइन यूके हूँ आमर से जो बणिया मैंने था जो मैंने निजर ही बेनिफिट पाई किसी भी करेंगे यूके लास्ट पर्यंत वेट करथिला कि इट माने सपोर्ट ऑब्वियसली देथिला का फ्रांस को कहिथिला इट विल सपोर्ट आमे इवन देखिबा कि रशिया वाज आल्सो इन दैट पर्टिकुलर अलाइ ट्रिपल एंटिटी जोड़ा आमे कहूछु बट व्हाट वी विल सी इज यूके वाज लास्ट टू जॉइन द वॉर एंड ताठु भी लास्ट रे के जॉइन कला इट वाज यूएसए हला सो इट वेंट समथिंग लाइक सर्बिया माने सर्बिया रो से जो लोकटा थिला अटैक असैसिनेशन करिला ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जे कि ऑस्ट्रिया हंगेरी रो एयर अपेरेंट टू दी थ्रोन थिले तो ता ऊपर फ्रांस ता ऊपर जर्मनी ता ऊपर रशिया यूके यूएसए क्लियर नेक्स्ट हु वर द सिग्नेटरीज ऑफ द अटलांटिक चार्टर ब्रिटेन फ्रांस अमेरिका रशिया ब्रिटेन फ्रांस ब्रिटेन एंड जर्मनी यूएसए एंड यूके सिग्नेटरीज ऑफ अटलांटिक चार्टर विषय भाभी थिले किए एटा आंसर करो 13 रो डी करेक्ट इजी एला अटलांटिक चार्टर हमरो साइन होची केबे हमरो किए डिसाइड डिस्कस करछे ई दी जन के भितरे एई दी जन से दीटा लोकंकर ना कोन थिला जे कि डिसाइड करथिले अटलांटिक व्हाट एग्जैक्टली विल बी अटलांटिक चार्टर हमरो यूके रो चर्चिल आ यूएस रो रूजवेल्ट हला चर्चिल आउ रूजवेल्ट ए दी जण मिसिकी हमर अटलांटिक चार्टरटा साइन कले एंड अटलांटिक चार्टर फाइनली अडॉप्ट हला एंड 1945 रे वी कुड सी इट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस राइट नेक्स्ट इज in which year the Bretton Woods conference was held? Easy question. When in which year the Bretton Woods conference was held? It answer karo. Bretton Woods conference was held. Correct. And it was an 8 formation hela amaro World Bank, International Monetary Fund hela dita economic conference आउ कौन consequence हेतला gold was declared or recognized as the basis of US dollar हला gold was recognized as the basis of US dollar hela 1944 the economic conference. Next, what was the significance of Pearl Harbor? It was the largest harbor located in Pacific Ocean. The attack on the harbor by Japan forced USA to enter into the Second World War. It was a major port for the export of arms and ammunitions from America. This harbor was captured by Japan and controlled till the end of the Second World War. Hela, try to answer this. Try to answer this. What was the significance of the Pearl Harbor? जल्दी आंसर करो. सिग्निफिकेंस पचारछि देखिए आंसर करिवो.
this question. Significance पचारछि तो आंसर करो only 2 correct हला only 2 is correct. एटा significance of Pearl Harbor is that it's the attack on the harbor by Japan forced USA to enter into the Second World War, and ame dekhiba the use of nuclear forces also happened, which happened on August 6th and August 9th hela on Hiroshima and Nagasaki. Little boy and fat man हला जो बॉम्ब दीटा साइन हेतला August 6 1945 August 9 हला क्लियर एवरीबॉडी. नेक्स्ट को जिबा which dynasty was in power at Russia on the eve of October Revolution? The Rurikids, the Romanovs, the Hohenzollern and the Valois. हला एटा आंसर करो very easy. Yes, the correct is option B, the Romanovs, right? The Romanovs आमरा October Revolution रशिया रे स्टार्ट करथिले. तो आमे जोटा पढिलु already, but we will still look into the reasons why Russian Revolution mostly started. Russian Revolution काहे की स्टार्ट हेथिला? Obviously there is the economic reason, taxation, heavy taxation होथला हला, and selling of offices which killed a lot of merit भांगी दोथला. Obviously when you sell your offices, you sell it to the highest bidder, not to the most intelligent person. So that is why selling of offices killed the merit, which led to corruption, right? That led to corruption inside the committee. So taxation heavy होथला, selling of offices, corruption and employment issues. Second is the social reason. The society was divided. SSB exam केबे होबो टेंटेटिवली सागरिका टेंटेटिवली क्लियरली तो मैं कहि परिबानी, बट मोस्टली कुहा जाउची कि आफ्टर SSB PGT सेटारो आछिवार चांसेस अछि. द गवर्नमेंट इज लिटरली माने एटा कहिबा कथा नै, बट आम फ्यूचर सहित एमती खेला भाया लगुच कि क्लारिटी ना कि क्लीयरली जना पड़ूनी कि कौन के एग्जाम हम. लास्ट आई टॉक्ड टू समवन माने जे एक्चुअली एग्जैक्टली बहुत लेट है. लास्ट मु जो टीचर को माने जन सहित कथा जे कि माने एसोसिएट माने हु इज एसोसिएटेड विथ द एसएसबी लेक्चर एग्जामिनेशन, से कहते कि अक्टोबर ये जो दशहरा छुट्टी पर मोस्टली अक्टोबर लास्ट वीक ना नवेम्बर फर्स्ट वीक, एबे जदि अक्टोबर लास्ट वीक नवेम्बर फर्स्ट वीक होता ताले नोटिफिकेशन तो एबे जाए आसी सारथा. तो जेहेतु एबे जाए नोटिफिकेशन आसीनी कि एसएसबी पीजीटी रो भी नोटिफिकेशन किछि भी आसीनी, एंड तार नोटिफिकेशन आगो आसिला इन कंपैरिजन टू एसएसबी लेक्चरर, तो सेथि पई लागुछि आहुरी डिले हबार चांसेस अछि. तो नवेम्बर को धरि कि चल थाओ, बट व्हाट वी कैन डू राइट नाउ इज सागरिका एंड टू एवरीवन जो माने भी अछ, शुभज्योति अतनु मधुसूदन जो माने भी अछ, आमे ए टाइम टा यूटिलाइज करबा जेमति कि जेबे भी एग्जाम हो आमे हाईएस्ट ही स्कोर करबा. आमे देखिबानी कि केते कोन माने केते स्कोर करी हबो बा कट ऑफ केते जाउची, आमे एमिति पढी थिबा जेमति आमे कट ऑफ पई वेट ही करबानी. एग्जाम हॉल रो आसीबा आमे कहबा हां आमे 100 टा क्वेश्चन डायरेक्टली ठीक करछु, 100 टा 110 120 क्वेश्चन आमे ठीक करछु, ता परे इनटू 1.5 करी मार्क्स जते भी आसु, बट सेति के जेमति कॉन्फिडेंस थिबो कि आमे सेमति जोर से पढिबा जे सारीबा. एवरीडे सेही टॉपिक गुडा को ही रिवाइज करी चला. आई अंडरस्टैंड तमरो पेशेंस भी रहउ नथिबो, माने obviously uncertain laguthbo, but this is माने essentially what we have come down to. आ वेट करबा छडा हमें किछि हमर पेशेंस नाही, तो सेटा ही असुविधा होची. हमर ओपीएससी पीजीटी आई गेस भल रे जाइथिबो. ओपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रो भी इंटरव्यू माने तारो तो डेट देइचंती कि डिसेंबर रे हबो. ओपीएससी पीजीटी रो कट ऑफ केते जिवो? ट्रिकी क्वेश्चन, डिपेंड करे माने से जिनसा डिपेंड करछि कि पिल्ला मानकर केमति हेथबो. माने आई डोंट हैव एनी आइडिया कि केते जिवो कट ऑफ हैला. तो से जिनस
यस मैम आई हैव दैट क्वेश्चन एसएसबी लेक्चरर कौन करवा माने मोर भी से क्वेश्चनटा अच्छी कि केबे हबो तमे नोटिफिकेशन बाहर करछ केबे मार्च मासरू बाहर कलानी एंड इट इज ऑलमोस्ट माने गोटे वर्ष जीवा अवस्था रे हलानी माने अक्टोबर एबे स्टार्ट हे सर जीव ऑब्वियसली दशहरा हॉलिडेज भीतर तमे करबनी एंड तमे जेबे भी बाहर करबो तार मासे भीतर मासे परे तो एटलीस्ट एग्जाम हबो तो तमे केबे करबो आउ लाइक पेशेंस समस्त रहे से सेमती माने बहुत जन था सेल्फ मोटिवेटेड होगी पढ़ती किसी ना बट नॉर्मल आम जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स मान देखा ताले फ्रस्ट्रेशन नेचुरली आसो बट से फ्रस्ट्रेशन टाको एबे टिके चापिकी रखिबार अच्छी एंड से ठीक एग्जाम टाइम रे आमे जतले कट ऑफ बहुत अधिक रखिदेबा सेतबेले बाहरी जबा आपे आपे हला एक्जाक्टली यू हैव नो पेशेंस सागरिका आमर भी माने मोर भी पेशेंस नहीं समस्त आई एम वेरी श्योर एठी जो माने भी अछंती दे कैन रिलेट टू यू कहार भी पेशेंस रहउनी एटलीस्ट गोटे डेट ता तो कहो कि केबे हो एग्जामिनेशन तुम जदि डेट कहबनी ने अंध भलिया पेशेंस कहार रुहेनी पिला माने सो एटा कहार भी माने से जिनसा कि वी हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल आवर पेशेंस बट राइट नाउ वी हैव नथिंग टू डू एक्सेप्ट टू वेट फॉर देयर नोटिफिकेशन टू कम डाउन एंड होपफुली से आगो ओपीएससी पीजीटी रो सॉरी एसएसबी पीजीटी रो ये कट ऑफ आसी जाओ देन ओपीएससी पीजीटी एग्जाम भलो जाइछि समस्तकर ओपीएससी पीजीटी एग्जाम भलो जाइछि समस्तकर बारंबार रिवीजन हेछि एंड आई होप सेटा भलो जाइथो बिकॉज माने आई होप यू हैव नॉट लॉस्ट द चांस यू हैव ट्राइड एंड यू हैव गिवन योर बेस्ट बिकॉज एमिति देखुछो एमिति वेट करिया को पडुछि जिनसटा तो नेक्स्ट जेबे भी जो भी एग्जाम आसुची मेक श्योर यू हैव स्टडीड वेल इनफ माने सेंती भलो भाबरे पढिच जे एग्जाम जहाँ भी क्वेश्चन आसु तमे क्लियर करिवो तो गपी देलु बहुत गुडे जिनस बट भल लागिला ताकि माने मु जानिली कि आम भलिया पिला माने सब अछंती आमे सब वेट करके रहिचु तो हे जिवो आसीबो तो नोटिफिकेशन फॉर श्योर बट बहुत डिले हे गलानी तो ये जो सोशल रीजन ता थिला रशियन रेवोल्यूशन रे ये जो हैव्स एंड हैव नॉट्स मानक भितर डिवाइड हो जाइथिला बुझुछ पिला माने हैज एंड हैव नॉट्स तो नेचुरली दी हैव नॉट्स वर मोस्टली ऑप्रेस्ड एंड ए जिनसटा सोशल रीजन टा फॉर्मेशन कला पॉलिटिकल रीजन कौन थिला पॉलिटिकल रीजन होची इट बिकेम वेरी एब्सोल्यूटिज्म आसी थिला गोटे रीजन पाई पिला माने हला पॉलिटिकल रीजन थिला एब्सोल्यूटिज्म और मोनार्की ऑटोक्रेसी हला ऑटोक्रेसी तो एटा केतेबेले आसीथिला जान एब्सोल्यूटिज्म रो गोटे रीजन टा थिला आसीबार तमर अछि एटा कोर्स रे फ्यूडलिज्म एब्सोल्यूटिज्म एटा माने ऑब्वियसली पढ़ी रखि था एब्सोल्यूटिज्म इज आल्सो व्हाई रिट्रैक्ट करनी किछ असुविधा नाही जहां भी कहूचो मु भी रिलेट करछि तम सहित सो देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ यू दिस इज अ फ्री प्लेटफॉर्म यू कैन से एनीथिंग दैट यू फील लाइक तुमको खराब लागु शेयर कले ही बेटर लागिवो किछ असुविधा नाही किछ खराब कथा लेखिनो बी प्राउड ऑफ व्हाटएवर यू आर सेइंग यू आर शेयरिंग योर फीलिंग्स दैट नथिंग टू वरी हला द एब्सोल्यूटिज्म जोडा आसिला तो मोस्टली एटा आसीथिला कहा पर पिला माने जो फ्यूडलिज्म परे ही जस्ट एटा एब्सोल्यूटिज्म आसिला काहे कि फ्यूडलिज्म रे हम गोटे डिसेंट्रलाइज्ड हायरार्किकल सोसाइटी टा देखुछु जो थरे कि गवर्नर्स मानकर बहुत अधिक पावर ही जाइथिला एंड द गवर्नर्स आर इन्वॉल्वड इन समथिंग व्हिच इज नोन एज सेल्फ अग्रेंडाइजमेंट निजरो गोटे गोटे छोटो एम्पायर कार्व आउट कर दोथले काहे कि ना से रूलर पाखरे ना रेवेन्यू थिला ना ही ता पाखरे गोटे स्टैंडिंग आर्मी कांस्टेंटली रोकथिला स्टैंडिंग आर्मी किए दोउची से गवर्नर माने जो माने गोटे मेंटेन करके रखुछंती तो ए सिचुएशन रे इन केस ऑफ एनी इंटरनल इन्वेजन तो द रूलर हैड नो so resources to fight तो इस situation में every governor had the opportunity to carve out its own empire and what happened is the church also ए जो governor माने जतबेले निजर गोटे छोट छोट empire carve out कर दउचंती ए church भी बहुत dominant हे जाउची church कोन करछि पिला माने ए process रे legitimization ए chapter टा भी अछि तमरो हला legitimization of the गवर्नर्स मानकर रूल तो इस सिचुएशन रे फ्यूडलिज्म रे सब किछि बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड हे जाइथिला पिला माने एवरीथिंग हैड बिकम वेरी डिसेंट्रलाइज्ड सो एब्सोल्यूटिज्म रे सेंट्रलाइजेशन टा बहुत अधिक बढ़ी जाउथिला एंड दिस वाज नीडेड फॉर द सोसाइटी टू रिफॉर्म बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम आफ्टर अ सर्टेन पीरियड मैम कैन वी से इट बिगिंस विथ लुइस 14 पीरियड यस इट बिगिंस विथ द बुर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस हला इट बिगिंस विथ द बुर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस हला स्पेन रे भी देखिबा हमें स्पेन रे भी होची इंग्लैंड रे भी होची एंड इट आल्सो हैपेंस इन रशिया
राइट सबु जगह सबु कंट्रीज आउ एटा ए तीनटा जो स्पेन फ्रांस स्पेन इंग्लैंड होची वेस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म ईस्टर्न एब्सोल्यूटिज्म रा एग्जांपल होची रशिया प्रूशिया आउ ऑस्ट्रिया हैला तो दीज आर आल्सो डिफरेंट थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर तो ये जो जिनसटा है एब्सोल्यूटिज्म रा सेंट्रलाइजेशन टा बहुत अधिक बढ़ी गला एबे सेही पीरियड रे सेंट्रलाइजेशन दरकार थिला टू एंश्योर स्मूथ पॉलिटिकल प्रोसेस स्मूथ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ये जो रशिया रे हो कि फ्रांस रे हो से जो एब्सोल्यूटिज्म टा ऑब्वियसली बॉदर कला व्हिच इज व्हाई यू विल सी कि या अगेंस्ट जो ऑटोक्रेसी अगेंस्ट समस्त लड़ीबा स्टार्ट कले एंड पीपल वर लुकिंग फॉर अ मोर liberal form of government like democracy like constitutional monarchy हैला तो एठी रोमानोव्स माने थिले जतबेले रशिया रे सेतबेले हमरो रशियन रेवोल्यूशन मोस्टली स्टार्ट हेथिला मैम ओडिसा हिस्ट्री 3 ऑथर्स रो पीडीएफ जो पठेई थिले सेथरे 48 और 49 पेज नाही प्लीज से दीटा टिके सेंड करि देबे डेफिनेटली आई एम ग्लैड कि तमे बहिटा पढिलो एंड देखिलो तो 48 और 49 पेज डेफिनेटली मो फोटो पठे देबे हैला किछि असुविधा नै बट आई होप समस्त जायके से बहिटा थर थर पढिबो से एसएसबी पाएंगे सेटा गोटे मस्ट हैला एसएसबी पाएंगे सेटा गोटे मस्ट तो प्लीज सेटा जाई पढो एंड क्लास रो नोट्स को रेफर करो क्वेश्चंस करो आई थिंक यू विल बी सॉर्टेड फॉर द नेक्स्ट एसएसबी एग्जाम तो एटा बुझिलो समस्त नेक्स्ट को जिबा दिस इज अ प्रोवर्बियल टर्म आयरन कर्टेन एसोसिएटेड विथ व्हिच कंट्री आयरन हैला iron curtain associated with which country मैम आपण एसपी नंद वर्ल्ड हिस्ट्री रो पीडीएफ मिली पारिबो की एसपी नंद रो वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छा एसपी नंद हाँ एबे छुट्टी हैला तो मु एबे सेटा पीडीएफ बने एबे छुट्टी हेनी 8 तारिख को मोर छुट्टी जो कॉलेज रो तो मु फ्री हे जबी मु पठेबी हैला सेटा गोटे फोटो उठे सेंड करिया पड़ो बिकॉज़ पीडीएफ तारो नाही मो पाखरे तो सेटा टिके प्रॉब्लम होची तो वंस आई गेट टाइम आई विल क्लिक पिक्चर्स एंड आई विल सेंड हैला ए 9 तारिख 10 तारिख भीतर सेंड कर देबे हैला बाकी ओडिसा हिस्ट्री रो जो हरिहर पंडा थिला हमरो एसी प्रधान पठाई थिला सेटा पढी सारछ समस्त देखिछो सेटा मैम प्लीज टिके पठे देबे से बुकटा डेफिनेटली राजेश्वरी किछि टेंशन नियनी पठे देबी किछि टेंशन नियनी टिके पठे देबे से को जागर भी हां सेटा पुराना भयटा तो सेत पई मिलुनी हैला डेफिनेटली टेलीग्राम रे शेयर कर देबे हैला हमरो जो ग्रुपटा ही अछि एसएसबी ओपीएससी रो जो ग्रुपटा स्पेसिफिक सेथरे ही पठेबे हैला सेगोडा सब तुम समस्त जॉइन करथिबो सेथरे पठेबी डोंट वरी हैला टेंशन नियनी सेटा पठे देबी आउ कोन पढी परिबो वर्ल्ड हिस्ट्री पय कहिथिली बीवी राव पढी चलनी बीवी राव हैव यू रेड बीवी राव राजेश्वरी सागरिका पठेइछो सेटा नेक्स्ट पढीथिबा भितर भी आंसर करो सोवियत यूनियन यस करेक्ट हैला सोवियत यूनियन इज करेक्ट आयरन कर्टेन माने कोन डन तो ठीक अछि तो सेटा नोट्स बनेबा स्टेप नोट्स बनाओ हैला तो आयरन कर्टेन माने कोन पर्दा आयरन मींस इट्स अ वेरी स्ट्रांग पर्दा तो सेटा केते बेले यूज करथले सोवियत यूनियन पाई कि तमे जतल देखिथबो जो कोल्ड वॉर टाइम रे देयर वाज अ आइडियोलॉजिकल इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन टू कंट्रीज हैला यूएसए एंड यूएसएसआर हैला दीटा कंट्रीज भितर हमें देखिबा ओटा आइडियोलॉजिकल वॉर टा चलीथिला एंड ए कंट्री दीटा भितर हमें देखिबा जो आइडियोलॉजिकल वॉर रे कोन होथिला ना बोथ दीस कंट्रीज जो आइडियोलॉजीज पे छिड़ा होतिले सेठी पे सबने मोस्टली लड़ुथिले तो यूएसए कोन पे छिड़ा होतिला यूएसए स्टूड फॉर कैपिटलिज्म whereas USSR stood for communism हैला communism तो capitalism is one of the earliest तो the economic changes that have gone through is feudalism capitalism socialism communism मते कहिबो if I am wrong somewhere but this is a layman understanding of the economic transitions तो ए capitalism रो दीटा consequence होची कोन imperialism and colonialism हैला कैपिटलिज्म माने कोन पैसा से माने इच्छा करथले इंडस्ट्री सेटअप करथले हैला
तो इंडस्ट्रीज जो सेटअप कर बेसी बेसी कौन दरकार हो रिसोर्सेज दरकार हो विच इज वाई दे हैव डिक्लेयर्ड देयर इंपेरियलिस्टिक डिजाइन्स कौन थिला टू कैप्चर मोर कंट्रीज फॉर दीज थ्री पर्पसेस है गॉड गोल्ड एंड ग्लोरी है गोल्ड माने ऑब्वियसली पैसा मिलिबो है गॉड होचंती कि क्रिश्चियन मिशनरी सेंड करिवे ग्लोरी ताकर प्रेस्टीज को ऐड करिवो तो सेथि पई कि से माने एटा सेकंड थिला कोन ना जो पैसा केमिति आसीबो ना रॉ मटेरियल्स आनिबे एंड रिसोर्सेज आनिबे रॉ मटेरियल्स आनिबे एंड ऑब्वियसली सेटा को से कॉलोनीज को मार्केट्स हिसाब रे यूज करिवे तो एई दीटा पर्पस पई कि से माने कॉलोनीज एस्टैब्लिश करवा स्टार्ट कले विच इज नोन एज colonialism. Clear? Understood? Establishment of markets. Direct answer दियंतु. Direct answer दियंतु. खाली आंसर कहि देले केमति लागिवो? खाली आंसर कहि देले ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग ता हबनी. तमरो ए क्वेश्चन थरे थरे आसी सारची. हैला? क्वेश्चन आसी सारची. किंतु जदि एक्सप्लेनेशन ता न देबी ताले नेक्स्ट एग्जाम भलो केमति करिवो? हैला? डायरेक्ट आंसर पाई कि माने खाली अच्छा ठीक अछि. Who was the founder of Zionism? Theodor Herzl, Chaim Weizmann, William Cohen, Golda Meir. Correct answer is Theodor Herzl. हैला? पाठ परे अरे बाबा केते मुह बा पाठ एबे नहीं पाठ परे आगो आंसर. Which countries did attack Israel during Yom Kippur War in 1973? Yes, I understand. Helpful तो रही ची obviously. मैंने हाँ ठीक है किसी असुविधा नहीं कहते हुए. Answer टा Which countries did Israel attack during the Yom Kippur War in 1973? B होगा answer. हला Syria and Egypt. एबे recently भी news रे आसी ची that Israel Iran attacks पढ़ी छ न्यूज़ देखु छ तो सेथि पई के हमर जो करंट अफेयर्स क्लासेस होची सेटा अटेंड करो पिला माने द करंट अफेयर्स क्लास 4टा बेले होची 7टा बेले होची सकाळ 7टा इवनिंग 4टा तो मेक श्योर यू अटेंड इट. तो दिस इज अ वेरी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट व्हिच इज गोइंग ऑन टिल नाउ तो यू मस्ट हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. This what was true about the Bloody Sunday of 1905? It was peaceful demonstration becoming violent on 22nd January 1905. It became one of the most important factors for the outbreak of ensuring Russian Revolution. Demonstration largely organized by communists. In this peaceful demonstration, thousands of people were killed by the royal forces. This is a tricky question. एटा देखिबा एटा डिस्कस करिबा बट एटा आंसर करो. आंसर फर्स्ट आंसर देउचो ए आंसर देला 1 आउट 2. ओके एटा हबनी काहेकि एंड एटा काहे हबनी 3 टा काहे कि हबनी कारण इट वाज लेड बाय वर्कर्स राइट. इट वाज लेड बाय रशियन वर्कर्स एंड नॉट द कम्युनिस्ट. तो 3 जोठी जोठी अच्छी कटि गला हमर हैला तो आमर रहिला ए आउ डी. तो इन दिस पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन thousands of people were killed, people becoming violent, important factors for the outbreak of Russian Revolution. So yes, it is actually 1 and 2 हैला. It is 1 and 2 हैला. Thousands were not killed but most of them got injured as well. Yes, so this is another thing that you have to remember. UGC नेट रो एग्जामिनेशन पाई कि जोड़ा कि डिसेंबर रे आसुची तारो constantly आमर क्लासेस एबे स्टार्ट हे जाईची and we will be continuing the classes. तो 3टा पेपर 1 तो रही ची. पेपर 1 रो जो आमर पेपर 10 यूनिट अछि सेटा तो आमर रही ची. आमर सर माने समस्त अछंती जो माने कि लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस एंड मोस्टली कोन तो कहंती लॉजिकल रीजनिंग एनालिसिस रिसर्च एप्टीट्यूड टीचिंग एप्टीट्यूड आ गोटे रहिला एजुकेशन रिलेटेड चैप्टर एनवायरनमेंट रिलेटेड चैप्टर सबु गुडा पेपर 1 रे हमर क्लियर हबो. एंड द पेपर 1 इज एक्चुअली द टर्निंग पॉइंट. लोक माने सेना कहंती कि एटा जस्ट खाली पास होबा पई कि पेपरटा अछि बट दिस एक्चुअली इज अ टर्निंग पॉइंट. फॉर एग्जांपल एठी खाली पास होबा पई तो मु 40 टा
40 रखिबार अछि बट जे 40 ऊपर को रखुची पिला माने धर सपोज फॉर एग्जांपल जणे 30 टा क्वेश्चंस ठीक करिछि सो आंसर हबो कोन माने केता मार्क पाइबो 60 मार्क से पेपर 2 रे ही खाली पाई गला तो दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस तो जो माने भी देखिबो नेट क्लियर करंती बा जेआरएफ क्लियर करंती टर्निंग पॉइंट टा निज पेपर माने छडा ए जो पेपर 1 टा ही थाए फॉर एग्जांपल मोर गोटे सांग जे कि जेआरएफ क्लियर करची सी माने लाइक पाखा पाखी 39 स्कोर करथिला पेपर 1 रे 39 स्कोर एज इन 39 टा क्वेश्चंस ठीक करथिला मोर निजरो आई गेस 35 टा क्वेश्चंस ठीक थिला पेपर 1 रे सो दैट इज द टर्निंग पॉइंट हला आउ ता छडा हमर ऑब्वियसली रेस्पेक्टिव कोर्सेस पाई कि हिस्ट्री रे स्टार्ट होची पॉलिटिकल साइंस एंड एजुकेशन रे स्टार्ट होची फॉर द टाइम बिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट क्लास सो मेक श्योर यू अटेंड इट तो मोर भी क्लासेस रहिबो हला तो मेक श्योर यू अटेंडेड समस्त सौरभ सर अच्छा दिग्विजय सर अच्छा रत्नाकर सर अच्छा एजुकेशन रो मैम आउ सर दी जन अच्छा सो मेक श्योर प्रकाश सर और अर्पिता मैडम दी जन अच्छा सो मेक श्योर यू अटेंड दी क्लासेस है नेक्स्ट यस with which treaty did the Russo-Japanese War come to an end 1905 Arthur Treaty of Portsmouth Treaty of Vladivostok and Mukden पेपर 1 रे 40 स्कोर दैट इज ग्रेट ता माने 40 स्कोर माने कोन 40 टा क्वेश्चंस तमे जदी ठीक करछो ताले 80 रहि जिवो ग्रेट 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 40 टा क्वेश्चन ठीक हे जाउची माने तमरो 80 रहि जायथिवो तो तमरो क्लियर होबार चांसेस बहुत बढ़ी जिवो सागरिका क्लियर हैला ए थर का तमे देइथिवो जदी केमती चलची नेट आ जेआरएफ येटा मते कहिबो हैला आ बाकी समस्त भी नेट जेआरएफ देइछो that is very important clear na congratulations sagarika congratulations ei barso ei jo august re exam heitila seita to na june july mane kota ta previous ta ko year re deithila congratulations sagarika this means a lot net clear heitila bus jrf this year are great congratulations hela with which treaty did Russo Japanese war come to an end in 1905 hela what is the cutoff marks for dv as in नेट जेआरएफ क्लियर कले बहुत बेनिफिट्स अच्छी आमर जो डिसेम्बर रे ओपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो इंटरव्यूटा अच्छी सेटा खाली जो माने नेट अच्छी से माने ही दे पारिबे सो कांग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल फॉर दैट आल्सो हैला तो पीएचडी पाए के भी सीट्स मिली जिवो बहुत बढ़िया माने ग्रेट सागरिका सो एटार आंसर होबो ऑप्शन बी पोर्ट्समाउथ हैला पोर्ट्समाउथ इज द करेक्ट आंसर यस next is for control of which city Arabs and Israelites were fighting Ramallah, Bethlehem, Tel Aviv, Jerusalem oh OPSC history cut-off marks something I would not like to comment exactly but depend करे माने पिला मानको ऊपर depend करे तो cut-off mark I do not want to make a guess also you will be कौन ये हम किंतु मन रखता माने ठीक ही आसो भल भल आसो एटा करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन डी करेक्ट जेरूसलम नेक्स्ट इज apartheid was practiced in which country South Africa South Rhodesia Tanzania Zimbabwe करेक्ट साउथ अफ्रीका एटा इजी क्वेश्चन अच्छे एटार एक्सप्लेनेशन दोनी प्रीवियस टा भी इजी क्वेश्चन थिला अपार्थेड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो चलथिला साउथ अफ्रीका रे इट वाज अगेंस्ट दैट एंटी अपार्थेड मूवमेंट व्हिच वन ऑफ द रेबेलियंस वर एसोसिएटेड विद द ओपियम वॉर इन चाइना बॉक्सर पाइकिंग कैंटन शंघाई एटा इजी 24 which rebellion was associated with the opium war that happened in China boxer piking 170 is a good score yes
170 तुम होउची आंसर चेक कले तो दैट इज अ गुड स्कोर. आंसर करो एटा ठीक भाबरे. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रेबेलियंस वाज एसोसिएटेड द ओपियम वॉर इन चाइना. ओपियम वॉर सहित को वॉर टा एसोसिएटेड थिला हैला. एटा आंसर करो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वॉर वाज एसोसिएटेड विथ द ओपियम वॉर इन चाइना. कोड़ा हवा करेक्ट आंसर. डी ना सी कोजा ना बी. द करेक्ट आंसर इज बी हैला पाइकिंग. नेक्स्ट इज where was the headquarters of the Arab League located. Headquarters of the Arab League located where? Headquarters of the Arab League is located where? Where is the headquarters of the Arab League located? Headquarters of the Arab League, it is not Damascus, it is Cairo, Egypt. Next question, how many permanent members are there in the United Nations Security Council? 11, 5, 7, 9. This is easy. How many permanent members are there in the United Nations Security Council? 5? Yes. Total 15 members. 5 होचंती permanent, 10 होचंती non permanent. ये जो 5 जन अछंती तांका पाखरे अछि कोन ना veto power. veto power माने जब 4 जन गोटे जिनस हाँ कहते कि जड़े भी मना करटा मना करा. Name the military ruler who ruled Spain from 1939 to 1975. Yes, who name the military ruler? Name the military ruler who ruled Spain from 1939 to 1975. Yes, it is A. Correct answer, Dharitri and Atanu. Yes, correct answer is A. So, it was Francisco Franca Belmonte. Next is, which one of the following are the founding members of NAM? Easy question ta eta. Eta habani. Eta habani. Eta. 4 and 1. Next is, which of the following treaties led to the formation of the European Union? Which of the following treaties led to the formation of the European Union? Was it the Treaty of Rome? Was it the Treaty of Maastricht, or Treaty of Paris, or Treaty of Glasgow? Which of the following treaties is responsible for the formation of the European Union? Answer is obviously Treaty of Maastricht. It was February 7, 1992. February 7, 1992. Correct. Next, where is the headquarters of International Labour Organization located? Where was the headquarters of the International Labour Association located? Geneva, Switzerland. Swiss. तो आज पाई एतिकी थाउ टाइम हे गला माने we will end the class right now and we will continue with the rest of questions in the next class. एबे पाई जदि काहर किछि डाउट नहीं will end the class, but I will request all of you to share the video and ask the other people to join and see and leave a comment. And see you in the next class, right?
Thank you everyone. ଆଉ କିଛି କାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? Thank you. Yes. Yes. Right. Okay.